I don't know the specific details, वो अभी still investigate हो रहा है. What I know is कि मैं घर पे था. I got a call around 2ish. It was a family friend who told us that my mom and dad have been in an accident, and I need to go there. So initially I was not very worried because I thought that it was a very minor accident, because my father usually drives very very carefully, follows all the rules and stuff. So after then he told me that we need to go to GTB Nagar. I was confused because my mom told me they were going to Bangla Sahib, which is about 20 kilometers away. So that was weird. Then when I reached the hospital, New Life Hospital, I first met my mom. So they kept her in the lobby on a stretcher, and they were like putting bandages on her, and she had her whole head, her arms, her legs all were taped up. And then some friends of my father were already there because they live around the area. So then one of them pulled me aside and told me that my father is no more. So then they asked me if I wanted to see him. So I went in the room, and when they pulled back the curtains, I couldn't even look for more than a second. कल मुझे दोपहर को पता चला, आंटी लोग, मासी लोग, ये लोग 3 बजे के करीब वहाँ पहुँचे. उसके थोड़ी देर के बाद उनका मुझे फ़ोन आ गया और हम निकल गए. फिर हम वहाँ घर से हम निकल गए. देन वी रीच द हॉस्पिटल. Somebody was showing some video, the person who was 3 row behind this accident case, he has just stopped, and people were making videos, not helping the family. The husband and wife were just lying near the bike and all. So some lady has told, इनको वहाँ, इनको कहाँ लेके जाऊँ? वो कहते हैं इनको वहाँ ले जाओ. And that lady happens to be driving BMW herself along with the husband. सी वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में थे वो. एंड ही वाज अ पूरा ब्यूरोक्रेट थे. वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे UN पीस में, IMF में. एंड ही वाज डूइंग सो वेल, एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग 3 कंट्रीज, जापान एंड कोरिया एंड एक कंट्री और था. आई एम नॉट गेटिंग द नेम, आई एम सॉरी. एक कंट्री और था, पता नहीं कौन. चाइना. एंड ही वाज रिप्रेजेंटिंग चाइना ऑल्सो. या तो वो एज ये कंट्री उनके अंडर था. तो वो अभी जैसे इंडिया में बुलेट ट्रेन का जो होने वाला था डील, ही वाज जस्ट डूइंग दैट ऑल्सो. जो डील ही वाज इनटू दैट. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे थे वो, बहुत अच्छे थे वो. मतलब कोई एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो उनके अगेंस्ट ऐसा कुछ बोले. एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा. सब उनको इतना पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे कि बस ही वॉज एवरीबडीज़ फेवरेट, एवरीवन्स फेवरेट. उनके पेरेंट्स हैं और वाइफ है और एक बेटा है और एक सिस्टर है. शी इज़ मैरिड और उसकी एक डॉटर है. शी इज़ बेस्ड इन US. I have lost my only son, who was very brilliant, very outstanding, and very lovable. आप इमोशनल हो रहे हैं. UN भी गए थे अभी नवजोत हाल में. He has been to UN. On 1st of May, he delivered the lecture on public sector financing, and we were proud that a Sikh and an Indian representative is being heard by these countries regarding suggestions for financing in developing countries should be simplified. He has recently undergone a training
recently means last week itself, he has gone for work exposure ground training at Meghalaya, Shillong for 4 days. And 6 days he had training in Delhi. And Friday was the last day of his training, and he has told us that he will come late because he's having a dinner with the friends. And he had his dinner, and during that dinner he was so active. He's taking a selfie, the smiling face, along with his colleagues, all deputy secretaries, whosoever were there. क्या पूरी घटना थी, एक बार विस्तृत तरीके से बताइए। सो मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर आया था नाइट स्टे करके, एंड मैं घर पहुंचा। मैंने मैसेज करा मम्मी पापा को कि मैं पहुंच गया हूं घर। वो लोग बंगला साहब गए थे। मेरे को मम्मी ने 11 बजे मैसेज करा था कि बंगला साहब जा रहे हैं। एंड फिर मैंने कॉल करा, उन्होंने कॉल उठाया नहीं। मुझे लगा बाइक चला रहे होंगे तो नहीं उठाएंगे कॉल। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक फैमिली फ्रेंड का फ़ोन आता है कि ऐसे उनका एक्सीडेंट हो गया, एंड वहाँ न्यू लाइफ हॉस्पिटल है GTB नगर में, वहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे पिक करा और लेके गए। थैंकफुली क्या हुआ था कि वैसे तो एक्सीडेंट के टाइम मेरे मम्मी पापा दोनों अनकॉन्शियस थे, बट मम्मी को बाद में कॉन्शियसनेस रिगेन हो गई थी। एंड उनको नंबर नहीं याद आ रहा था किसी का भी, मेरा भी नहीं आ रहा था एंड और किसी का भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक ऐसे बोल दिया कि एक हॉस्पिटल में हमारे ये फ्रेंड है तो उनको बता दो, क्योंकि वो ट्रेसेबल था। तो उसी के थ्रू पता लग गया, नहीं तो पता ही नहीं लगता है। तो उसके बाद दोहरा अराउंड 1:30 बिटवीन 1 and 1:30 एग्जैक्ट टाइम अभी पता नहीं, बट ये एक्सीडेंट हुआ था। गर्ल ड्राइविंग BMW क्रैश इनटू माय पेरेंट्स मोटरसाइकिल, एंड उसके बाद ही वॉज, हाँ वहाँ पे जो पता लगा कि ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। बट अगेन कि यूजुअली जिन लोगों ने मतलब बात करी है अभी, उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के इंस्टेंटली बाद डेथ इज़ वेरी रेयर, मतलब यूजुअली थोड़ा टाइम होता है। एंड धौला कुआं के पास तो यू हैव एम्स, यू हैव सुपर स्पेशलिटी, इतने सारे हॉस्पिटल हैं, इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ ले जाते तो शायद बच जाते। एंड माई पेरेंट्स एक्चुअली गॉट देयर इन अ वैन, मतलब देवर अनकॉन्शियस। किसी ने उनको पोर्टर वाली डिलीवरी वैन होती है उसमें डाल दिया। मेरी मम्मी को बीच में कॉन्शियसनेस आई थी वापस, शी वॉज इन द पैसेंजर सीट, और उन्होंने ऐसे पीछे देखा तो पापा ऐसे लेटे हुए थे। It is very apparent whenever the accident takes place. It is a general phenomena. The person is taken at the highest speed to the nearest possible medical facilities or hospital, and they have not done it. They have intentionally gone about 20 kilometers in a very poorly structured nursing home, because that lady lives somewhere close to the next hospital. But that lady was admitted in the first floor of that nursing home as a case of high blood pressure, and the husband was on the ground floor itself where my son was lying, and I didn't talk to him. I never knew also. My daughter-in-law has been shifted to Venkateshwar Hospital, Dwarka, by a colleague of very intimate known person, Mr. Rishabh. He is a manager in that hospital, and he is our friend, family friend. So he has managed to bring the ambulance and get it shifted to. And today the operation is going on for her. Some surgical procedure is going on for about 4 hours. They are in that hospital. So the accident happened in Dhaula Kuan, and for some reason he was my mother and him both were unconscious, and they were taken to a hospital in GTB Nagar, in Mukherjee Nagar.
called New Life, which is 20 kilometers away. That is about an hour of drive, and they were not even taken in an ambulance. They were taken in a delivery vehicle, the porter vehicle, which has like a Omni or a Eco. So this is what my mother told me when she came back to her senses for a while. She woke up. She saw that she was in the passenger seat, and she looked behind her. Then my dad was laying on the back of the delivery vehicle, and my mom asked the driver to take them to another hospital which was nearby, but I don't know what happened. They still took her to the New Life Hospital in GTV now. Right now the doctors are still running tests, but as of now she has 14 stitches in the back of her head, even though she was wearing a helmet, and she has a shattered femur, which and she has a lot of bruises and cuts all over her body, and she's just talking in loops, repeating the same thing again and again. I'm not exactly sure if the FIR has been registered or not, but the police was very cooperative, and they told me they would register the FIR after taking a statement from my mother, which they did. So I'm not very invested into the police stuff right now. I'm more into taking care of my mother. So the accident part is another thing. The whole thing that they were taken 20 kilometers away, and if they were taken to the hospital was a really, really bad hospital. It was not even a super specialty or a big hospital. So but maybe if they had reached a hospital closer, maybe AIMS or any super specialty near Dhaula Kua, yeah, the police is cooperating quite well. The OI is working well. His action is being taken. Sorry. Yeah, action will be taken after the investigation starts. We are yet to receive the CCTV footage. The police has said that they have freezed the footages. Well, they have taken them, and they will be extracting it and sending it to us tomorrow. That was very intentional. Taking a person that far off and that too near her home, the intention is very clear. अगर लोग वीडियो ना बना के हेल्प करते तो नवजोत हमारे साथ होता इस समय बीच में. Of course, things would have been different. Had he been admitted to RR hospital, which is about 4 kilometers from there, and we always help those cases. And this is one of the biggest army hospital in Asia. Research and referral, Army Hospital, Delhi, Kent. I used to get my treatment there, my wife's everywhere. एम्स भी पास है, सफदरजंग भी पास है. इतनी दूर जाने से Even Safdarjung is on the same road, ring road, there is no problem, and it takes about 10 minutes. And if you go Ramoro, Loya Hospital, that is also not that very far off. आपको लगता है कि वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि इसको कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश है उन लोगों की? छुपाने का तो it is very clear. Now nothing will happen. The Indian law is such. The person will get bail. It is a bailable offence. And that's all. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनसे गलतियां हुई हैं, चाहे वो एक्सीडेंट से पहले रैश ड्राइविंग या एक्सीडेंट के बाद द वे शी ट्राई टू रेस्क्यू, अगर उसमें गलतियां हैं इंटेंशनल और इंटेंशनल अगर हैं, एंड इफ पुलिस को इंक्वायरी में ये चीज़ मिल जाती है तो डेफिनेटली शी विल हैव टू पे द प्राइस, इज ऑल आई कैन से. क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन वो रिलेटिव से मिली है, बिट्स एंड पीसेज में मिली है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता. बट द थिंग इज कि फर्स्ट लॉजिकल चॉइस किसी भी एक्सीडेंट में, एंड स्पेशली इफ यू आर ट्राइंग टू रेस्क्यू समवन, is always the hospital which is nearest to you and which has the infrastructure to handle emergency cases. अगर वहाँ नहीं ले गए तो उसके पीछे उनका क्या रीज़न था, I really don't know. मेरे को फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन मिली है, may not be accurate to say
in front of the camera. But those decisions were wrong. If you want to really save someone, you should take the person or the victim. The one people should learn that they should not go in for video conferencing or something like that. When a person is dead, he should be given immediate help. There should be some constructive attitude to help the person to go to the nearest hospital for recovery or possibilities so that the damage done is reduced. क्या कहेंगे, ड्राइव केयरफुली, दैट इज़ द ओनली थिंग. आपने एक फैमिली बर्बाद कर, आपको एक लिखा आता है स्पीड थ्रिल्स बट स्पीड किल्स ऑल्सो, यू नो. बड़ा मज़ा आता है तेज़ चलाने में, बट सी व्हाट हैज दिस एक्सीडेंट, व्हाट हैव यू डन, यू नो. देखो, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने इतने अच्छे पोल्यूशन को लेकर नॉर्म्स लिए हुए हैं कि वेयर व्हीकल विद एन इंजन ओल्डर देन 10 years शुड नॉट कम, ठीक है. और इवन जो चालान होता है, आपकी अपनी गाड़ी है तो अगर पीयूसी नहीं कराए तो 10,000 का, किसी और की गाड़ी चला रहे 20,000 का. वेरी वेरी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स. तो इवन व्हीकल जो दोज व्हीकल्स दैट प्लाई ऑन द रोड, उनको ना ज्यादा पावरफुल इंजन्स नहीं देने चाहिए, बिकॉज पीपल अनोइंगली डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट. इतनी पावर को हैंडल करना, और मे बी पुलिस जो लोगों को चेज करती है, पुलिस के पास ऐसी गाड़ियां हों, एम्बुलेंसेज में ऐसी हों, इवन प्राइम मिनिस्टर फ्लीट में ऐसी गाड़ियां हों, बट एक आम आदमी को ऐसी गाड़ियां मत दो. शुडंट बी अलाउड. इट्स जस्ट अ पॉइंट. इट्स जस्ट अ पॉइंट. ठीक, शुक्रिया. I definitely do want justice, but personally it won't bring my father back. I mean, for people like these shouldn't roam free. But personally, to me, if I only from an egotistical point of view, it does not affect me. But I definitely believe that these people should not be roaming free.